Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall discuss our next lecture, that is about Mycobacterium leprae. Leprosy is a disease which is caused by Mycobacterium leprae, and it is a particularly tragic affliction as the nature of the infection often causes severe disfigurement and deformation have led to social ostracism or even total banishment from the society of those suffering from the disease. The disease was long endemic in British, and Robert the Bruce of Scotland was one of its victims. The last British patient to acquire the disease in this country died in the Scotland in 1798. तो ये जो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोस माइकोबैक्टीरियम लेप्री डिजीज़ है, इसको हम लेप्रोसी बी कहते हैं और इसको के अंदर जज़ाम कहते हैं, या इसको कोर की जो बीमारी है हम उसको लेप्रोसी कहते हैं। और ये ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर एक तो जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी डिसफिगरमेंट होती है और उसके साथ साथ डिफॉर्मिटी होती है। और ये जो डिजीज़ थ्रू और द हिस्ट्री अगर हम देखें तो इसकी वजह से सोशल ऑब्स्ट्रसिज्म ये काज करती है। सोशल ऑब्स्ट्रसिज्म से मुराद क्या है कि जिस भी इंडिविजुअल को ये हो जाती थी तो वो उसके घर वाले उसको किसी वीरान जगह के ऊपर छोड़ देते थे, क्योंकि उनका ये बिलीव था कि ये जो डिज़ीज़ है ये एक बंदे से दूसरे बंदे से वो ट्रांसफ़र हो जाती है, और वो उस इंडिविजुअल को किसी वीरान जगह के ऊपर जब छोड़ जाते थे तो वो बंदा वहाँ पे जो है ना तरप के क्या हो जाता था, वो मर जाता था। और चूँकि उस टाइम के अंदर इसके बारे में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है या जो लेप्रोसी डिजीज़ माइकोबैक्टीरियम लेप्री काज करता है, तो उसकी वजह से मिसकंसेप्शन थी, और उस मिसकंसेप्शन की वजह से जो लोग इसका शिकार हो जाते थे उसको घर वाले ही जो है ना उनको मरने के लिए छोड़ देते। एंड और ये जो डिज़ीज़ है ये वर्ल्ड के डिफरेंट टाइम्स के अंदर डिफरेंट रीजन्स के अंदर ये मौजूद रही है। इन नॉर्वे द डिजीज़ परसिस्टेड इनटू द 20th century and the scientist known as Hansen first described the causative organisms in that century in 1873। इट्स मीन कि जो ये लेप्रोसी थी ये 1873 के अंदर फर्स्ट टाइम उसको एक साइंटिस्ट जिसको हैंसन कहते हैं उसी की मुनासबत से इस डिज़ीज़ को हम हैंसन डिज़ीज़ भी कहते हैं। और उसने 1873 के अंदर इसका जो फर्स्ट पॉजिटिव एजेंट था उसको इसने क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। और द करंट सिचुएशन इज़ cause for optimism as the number of registered patients on treatment declined from more than 10 million in 1982 to 5,14,718 in 2003 and 2,44,796 in 2009. This decline has been slower in recent years, but this may reflect a higher case detection rate. इट्स मीन जब ये डिज़ीज़ डिस्कवर नहीं हुई थी, इसका जो कॉजेटिव एजेंट जो बैक्टीरिया है वो जो डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उससे पहले इस डिज़ीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन थी। और जब किसी इंडिविजुअल को ये डिज़ीज़ हो जाती थी तो फिर उसके मोर्टेलिटी का रेट जो था वो 100% था, क्योंकि उस वक्त ट्रीटमेंट नहीं थी और जो सोसाइटी का रिस्पांस लेप्रोसी के अगेंस्ट उस टाइम के ऊपर था वो अच्छा नहीं था। और इवन के जो घर वाले भी थे वो भी किसी इंडिविजुअल को हो जाता तो फिर वो जुल्म करके उसको वहाँ से निकाल देते थे और इंडिविजुअल जो है वो तरफ के मर जाता था। लेकिन 1873 के अंदर नॉर्वे के अंदर एक साइंटिस्ट हैंसन ने इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया और इसका जो पॉजिटिव एजेंट था माइकोबैक्टीरियम लेप्री उसको डिस्कवर किया कि ये जो डिज़ीज़ है ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री काज करता है। और उसकी वजह से फिर दुनिया ने इसकी तरफ तवज्जो दी और जो करंट सिचुएशन है इसकी हमारे पास वो बहुत उसके लिए हमारे पास उम्मीद थी है कि जो इसके नंबर जो रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं वो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है उसके नंबर कम होते जा रहे हैं। और इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि जो वर्ल्ड है उसने इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर और इसके बारे जो मिसकंसेप्शन थी उनको ख़त्म किया, और वो स्टिल अभी भी परसिस्ट डिफरेंट रीजन्स के अंदर करती हैं। लेकिन
जो वर्ल्ड ने उसका जो परसेप्शन चेंज किया, और उसको जब जो पेशेंट थे, जो पहले उनकी जो मर्टेलिटी थी वो 100% थी, और उसकी रीज़न ये थी कि उनकी ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं था। और जब ये कॉजेटिव एजेंट डिस्कवर हो गया तो फिर इसके अगेंस्ट ट्रीटमेंट शुरू हुई, और फिर रैपिडली दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इसका जो नंबर था वो रिड्यूस हुआ। फॉर एग्जांपल इन 1982 ये जो नंबर था ये 10 मिलियन था, और 2003 के अंदर ये 5 लाख तक आ गया, और 2009 के अंदर ये 2 लाख 44,000 ऑलमोस्ट 45,000 पे आ गया। And this decline has been slow in recent years, but this may reflect a higher case detection rate. Leprosy has been eliminated from 119 out of 122 countries in which the disease was regarded as a public health problem in 1985, and in stark contrast to the tuberculosis, resistance to therapy has not proved to be a barrier to treatment. The World Health Organization has therefore adopted a final push strategy with the goal of eliminating this disease. And leprosis is often cited as a disease of grand antiquity, but literary and skeleton evidence as evidence of this very characteristic disease go back further than 500 BC. And biblical leprosy was almost certainly not the same as the disease that now bears this time. यानी जो लेप्रोसी थी, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो वर्ल्ड का रिस्पांस था जब ये डिस्कवर हो गई, तो फिर इसके अगेंस्ट ट्रीटमेंट शुरू हुई, और अब ये दुनिया के 119 मुल्कों में ख़त्म हो चुकी है। और इसकी वजह क्या थी? क्योंकि ये डिज़ीज़ थी, ये 1985 के अंदर वर्ल्ड के लिए एक हेल्थ प्रॉब्लम थी, लेकिन जब इसकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई तो फिर इसके केस क्या होना शुरू हो गए, डिक्लाइन होना शुरू हो गए। और केस इसके पहले इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये इसकी ट्रीटमेंट भी नहीं होती थी, और सोसाइटी का जो रिस्पांस था वो ठीक नहीं था। दैट्स वाई जो उस केस के अंदर मोर्टेलिटी थी वो 100% थी। जिस पे इंडिविजुअल को हो जाती थी तो वो उसके अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि उसकी आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते थे, क्योंकि हमें कॉजेटिव एजेंट ही पता नहीं था, और डिफरेंट उस डिजीज़ के अगेंस्ट मिथ्स डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर थी, तो उसको ट्रीट करना डिफ़िकल्ट था। लेकिन जब इसकी हमने ट्रीटमेंट शुरू की, क्योंकि ये माइकोबैक्टीरियम जीनस है जिसके अंदर हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी प्रेजेंट है, जो हमारी बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है। लेकिन व्हेन वी कंपेयर the treatment of Mycobacterium leprae with Mycobacterium tuberculosis, the resistance that developed by Mycobacterium leprae is low as compared to Mycobacterium tuberculosis. That's why हमने इसकी ट्रीटमेंट शुरू की, और जब ट्रीटमेंट शुरू हुई तो वर्ल्ड के अंदर ग्रेजुअली जो नंबर ऑफ केसेस थे वो डिक्लाइन उनका होना शुरू हो गया, क्योंकि जब ट्रीटमेंट शुरू हुई तो वो हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते थे। और इसीलिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्ट्रेटजी अपनाया कि ताकि इसको पूरी दुनिया से क्या किया जाए, ख़त्म किया जा सके। और ये जो डिज़ीज़ है ये बहुत ओल्ड जो हमारी जो पॉपुलेशन या सिविलाइजेशंस थी वहाँ पे भी ये प्रेजेंट थी, यानी इसका जो ओरिजिन है वो बहुत बैक डेटेड है, यानी बहुत ओल्ड टाइम के अंदर ये डिज़ीज़ क्या थी दुनिया के अंदर प्रेजेंट थी। अभी भी ये दुनिया के कुछ कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है, लेकिन मोस्टली इसकी जब ट्रीटमेंट जब किसी इंडिविजुअल को हो जाती है तो उसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट मैकेनिज्म डेवलप किए जाते हैं ताकि उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल को माइकोबैक्टीरियम लेप्री से फ्री करवाया जा सके। This raises the intriguing question of ancestry of this bacillus, which has no widespread animal reservoir. Natural experiment reservoirs for a progenitor of Mycobacterium leprae, such as amoeba, have been postulated but not convincingly demonstrated. Likewise, it has been postulated that Mycobacterium leprae can survive in environment possibly amoeba and infect human beings. And when we talk about the description of Mycobacterium leprae, as you know, it belongs to Mycobacterium genus. And when we
डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम, तो उसके अंदर जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो नॉर्मली जो हमारे डिफरेंट स्पीशीज से उनसे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जो हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया हैं हम उनको दो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। वन इज कॉल्ड gram positive and other one is called gram negative, and this classification is based on the staining principle. But the mycobacteria did not follow the general gram staining principle because they have different constituent in their cell wall as compared to gram positive and gram negative cell wall structures. तो जो माइकोबैक्टीरिया हैं, एक तो ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स है कि ये स्लो ग्रोइंग है। वैसे जो हमारे पास नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं वो आफ्टर 20 मिनट डिवाइड करते हैं, और ये जो हैं ये बहुत स्लोली ग्रो करते हैं और इनको कॉलोनी के अंदर डेवलप होने के लिए वीक्स चाहिए होते हैं। इट्स मीन कि ये जो इनकी ग्रोथ है ये बहुत स्लोली है। सेकेंडली इनकी जो सेल वॉल है इसके अंदर माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, और इनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। जो नॉर्मली माइकोलिक एसिड जो है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर प्रेजेंट नहीं होता जो सेल वॉल है उनकी, इसीलिए इनको हम एसिड फास्ट कहते हैं। और इनकी स्टैनिंग जो हम करते हैं उसके लिए जो हम क्रिस्टल जो हम इनके लिए प्रिंसिपल स्टैंड और काउंटर स्टैंड यूज़ करते हैं वो ग्राम स्टैनिंग से डिफरेंट होते हैं। और इनकी जब हम स्टैनिंग करते हैं तो फिर इनके लिए जो हम प्रिंसिपल स्टैंड यूज़ करते हैं हम उसको कार्बन फोस्टिन कहते हैं, और जो इनके लिए हम काउंटर स्टैंड यूज़ करते हैं हम उसको मेथिलीन ब्लू कहते हैं। इसीलिए हम इनको एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहते हैं। एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्री हैज़ नेवर कन्विंसिंगली बीन कल्टिवेटेड इन विट्रो, यानी आप इसको बॉडी से बाहर ग्रो नहीं कर सकते हैं। दिस हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू लॉस और डिसरप्शन ऑफ मैनी ऑफ द जीन्स रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म। The genome of Mycobacterium leprae is smaller than that of cultivatable Mycobacteria, and about half of its genes are defective counterparts of functional forms in other Mycobacteria. In 1970, it was shown that armadillos experimentally infected with Mycobacterium leprae often developed extensive disease with up to 1,010 bacilli in each gram of the diseased tissue. So जब हम माइकोबैक्टीरियम लेप्री की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो एक तो ये एसिड फास्ट हैं, इनकी जो सेल वॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नॉर्मल बैक्टीरिया से डिफ़र करती हैं। दूसरा, इनको स्टैंड करने के लिए हमें डिफरेंट प्रिंसिपल स्टैंड और काउंटर स्टैंड यूज़ करने पड़ते हैं। इसके अलावा ये इनकी जो ग्रोथ होती है वो नॉर्मल बैक्टीरिया की इनका एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो बहुत स्लोली होती है। और जो जीनोम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री का वो स्मॉलर है, उसके अंदर कम जीन्स हैं एज़ कम्पेयर टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इनकी कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये इन विट्रो इनको कल्टीवेट आप नहीं कर सकते। लेकिन 1970 के अंदर इनको आर्मीडिलोज जो मैमल्स हैं उनको एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्ट किया गया माइकोबैक्टीरियम लेप्री से, और फिर उनको उनके जो बैसिलाई हैं उनको उन डिजीज टिश्यू से निकाला गया, और फिर ये जो बैसिलाई हैं इनकी फर्दर स्टडी की गई। Therefore, this animal has therefore provided sufficient bacilli for research projects and for the production of a skin test reagent, leprosine A. A limited replication yielding 106 bacilli after 6 to 8 months also occurs in the mouse foot pad, and this has been used for testing the sensitivity of bacilli to anti-leprosy drugs. And leprosy bacilli resemble tubercle bacilli in their general morphology, but they are not so strongly fast. तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम लेप्री है ये इन विट्रो आप इसको कल्टीवेट नहीं कर सकते, लेकिन 1970 के अंदर जब आर्मीडिलोज के अंदर इनको इन्फेक्ट किया गया तो फिर वहाँ पे इन्होंने वो डिज़ीज़ को इस्टेब्लिश किया, और वहाँ से जब इन्होंने डिज़ीज़ को इस्टेब्लिश किया तो उस जो आर्मीडिलोज थे उनके जो डिज़ीज़ टिश्यू थी वहाँ से माइकोबैक्टीरियम लेप्री को आइसोलेट किया गया इसके बैसिलाई को,
और उसके लिए फिर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स बनाए गए ताकि ये जो बेसिलाई हैं इनके ऊपर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकें, इनके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जान सकें और इनकी जो ट्रीटमेंट है इस डिजीज़ के अगेंस्ट हम उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के हम क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें और डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट लाइक रीजेंट लेप्रोसिन ए टेस्ट किया जा सके। और लेप्रोसी जनरली जो इसके बेसिलाई हैं, जब हम इसकी जनरल मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से रिजेंबल करता है, बट ये इतना ज़्यादा एसिड फास्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड फास्ट नहीं है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड फास्ट हैं, बट दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एसिड फास्ट एज कम्पेयर टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। And in clinical material from lepromatous patients, the bacilli are typically found within macrophages in dense clumps, and characteristic surface lipid peptido glucolipid A has been extracted from Mycobacterium leprae, and its unique carbohydrate antigenic determinant has been synthesized. Specific PCR primers for diagnostic purposes and for seeking the bacilli or its progenitor in the natural environment have been synthesized. When we talk about the pathogenesis of Mycobacterium leprae, the principal target for the leprosy bacilli is the Schwann cell, and the resulting nerve damage is responsible for the main clinical features of leprosy, and it's basically it causes nerve damage that is responsible for main clinical features of leprosy, and it causes anesthesia, and anesthesia is basically insensitivity to pain receptor. And नॉर्मली जब हम किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं तो हम उसको एनेस्थीसिया देते हैं जो पेन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है कुछ टाइम के लिए, ताकि हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो हमारे पास ऑपरेशन हम उसको ऑपरेट कर सकें। क्योंकि अगर आप नॉर्मली किसी भी इंडिविजुअल का वैसे ऑपरेशन करना शुरू कर देंगे तो जो स्किन के ऊपर पेन रिसेप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट करते हैं फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉर पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो नॉर्मली हम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स देते हैं जो एनेस्थीसिया काज करते हैं, लेकिन ये जो एनेस्थीसिया है ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे बी काज करता है, उसकी वजह से जो आपकी पेन सेंसिटिविटी टू इनसेंसिटिविटी टू पेन रिसेप्टर हो जाएगी और आप सेंसेशन नहीं फील कर सकेंगे। एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Mycobacterium leprae is that it causes muscle paralysis. It means ये मसल को भी पैरालाइज करता है। Repeated injuries to an infection of the anesthetic extremities leads to their gradual destruction. और जिस जगह के ऊपर आपका एनेस्थेटिक हो चुका है तो अगर वहाँ पे आपकी डिफरेंट इंजरीज होंगी तो फिर वो आपकी ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन टिश्यू की काज करेगा। And infiltration of the skin and cutaneous nerve by bacilli leads to formation of visible lesions often with pigmentary changes. तो जब ये जो bacilli हैं ये आपके स्किन के अंदर जाएंगे तो फिर ये विजिबल लीजन्स को फॉर्म करेंगे जो मोस्टली पिगमेंटरी चेंजेस क्या करते हैं वो काज करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो पैथोजेनेसिस है इसकी, एक तो ये श्वान सेल को डैमेज करता है और दूसरा ये एनेस्थीसिया काज करता है, तीसरा ये मसल पैरालाइसिस काज करवाता है, और अगर ये इन्फिल्ट्रेशन इसकी स्किन के अंदर हो जाएगी तो फिर ये फॉर्मेशन ऑफ विजिबल लीजन्स काज करता है जिसको जो मोस्टली पिगमेंटेड उनकी क्या होती हैं चेंजेस होती हैं। And first sign of leprosy is a non-specific or interminate skin lesion which often heals spontaneously. तो जो इसका फर्स्ट लेप्रोसी का नॉन स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्किन लीजन फॉर्म करता है और वो जनरली हील अप हो जाता है। If the disease progresses, its clinical manifestation is determined by the specific immune responsiveness of the patient to the bacilli, and there is a distinct immunological spectrum of the disease. It's mean कि जो भी इंडिविजुअल होगा उसमें नॉन स्पेसिफिकली स्किन लीजन फॉर्म्ड होगा फर्स्टली, और नॉर्मली वो जो लीजन फॉर्म्ड होगा वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, और जब डिजीज़ प्रोग्रेस करेगी तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो हम डिटरमिन करते हैं वो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस जो उस पेशेंट का उस बैसिलाई के अगेंस्ट होगा उससे हम डिटरमिन करते हैं। एंड देयर इज़ अ डिस्टिंक्ट
immunological spectrum of the disease, and the points on the spectrum are basically here is a disfigurement of hands that is caused by Mycobacterium leprae. And when we talk about types of Mycobacterium leprae, there are generally two types of Mycobacterium leprae. One is called tuberculide leprosy and other one is called lepromatous leprosy. These are the basically major two types that are used to characterize different forms of Mycobacterium leprae and hyperreactive tuberculous leprosy with small number of localized skin lesions containing so few bacilli that are not seen on microscopy and inappropriately intense glomerulomatous response that often damage major nerve trunks. तो जब हम स्किन के हिसाब से इनको देखेंगे तो इनको जनरली हम टू टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं. एक को हम कहते हैं tuberculous leprosy and second one is called lepromatous leprosy. And in case of hyperreactive tuberculous leprosy, the number of localized skin lesions are low and they contain very few bacilli, and that bacilli are not even seen when we see them through microscopy, and they are inappropriately intense granulomatous response that often damages major nerve trunk. And the second type of Mycobacterium leprosy, second type of leprosy is called energetic lepromatous leprosy, in which the skin lesions are numerous and contain huge number of bacilli, usually seen as clusters are globi within monocytes, and cooler parts of the body such as earlobes are particularly heavily infiltrated by bacilli. These histological evidence of immune response, तो ये हमारे immune response को show करवाते हैं. तो जो भी हमारे पास वैसे इसकी हम इसके अलावा भी और बहुत सारे टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, लेकिन क्लासिकली हम इसको ट्यूबरकुलाइड और लेप्रोमेटस लेप्रोसी के अंदर डिवाइड करते हैं. ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी के अंदर जो नंबर ऑफ लीजन स्किन फॉर्म होंगे वो कम होंगे और उनके अंदर जो बैसिलाई का नंबर होगा वो भी कम होगा. और तीसरी करेक्टरिस्टिक है कि आपको वो माइक्रोस्कोपी के अंदर अपीयर नज़र नहीं आएंगे. और जो लेप्रोमेटस लेप्रोसी है उसके अंदर जो स्किन लीजन से मुराद स्किन के ऊपर जो छाले से बनेंगे, जो पिगमेंटेड भी होते हैं, वो न्यूमरस होंगे, वो एक से ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं होते हैं. और उनके अंदर जो नंबर ऑफ बैसिलाई होता है वो भी ह्यूज होता है. Or they are usually present in the form of clusters, and cooler parts of the body such as ear lobes are particularly heavily infiltrated by bacilli, and their histological evidence of an immune response. Besides it, there are many other forms, intermediate forms classified as borderline tuberculide, mid-borderline, or borderline lepromatous leprosy. And destruction of the nasal bones may lead to collapse of the nose. In addition, large numbers of leprosy bacilli are discharged in nasal secretions in the multibacillary disease. The eye is frequently damaged by direct bacilli invasion cause corneal infection secondary to paralysis of the eyelids, and blindness is a common and tragic complication of untreated leprosy. तो जो हमारे पास इसके इंटरमीडिएट फॉर्म्स हैं हम उनको बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलाइड, मिड बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलाइड, मिड बॉर्डर लाइन और बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस कहते हैं. और इसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन नेजल बोन्स की होती है उसकी वजह से जो नोज़ है उसकी भी डैमेज होगा. इसके अलावा जो लार्ज नंबर्स जो होते हैं लेप्रोसी बैसिलाई की डिस्चार्ज होते हैं मल्टी बैसिलरी डिजीज़ के अंदर. और जो डिज़ीज़ जो आई है वो डायरेक्टली भी बैसिलरी इन्वाजन करते हैं, या जो corneal infection that is secondary to paralysis of the eyelid is also caused by Mycobacterium leprae, and blindness is a common and tragic complication of untreated leprosy. तो अगर आप लेप्रोसी को ट्रीट नहीं करेंगे, अनट्रीटेड रखेंगे, तो ये फिर आई के अंदर जाके ब्लाइंडनेस काज करेगा. और इट इज़ अ वेरी कॉमन एंड ट्रेजिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस लेप्रोसी डिजीज़.
So we can see that it basically infects Schwann cells. It causes muscle paralysis. It forms skin lesions, which can vary in number. In case of tuberculosis, it causes low number of skin lesions. In case of lepromatous and leprosy, it causes a huge number of skin lesions in which huge number of Mycobacterium leprae are present. And beside this is also infect nasal passages, and which number of bacilli are also present, and it also infect directly to the eyes, or it also damage it also cause corneal infection. And if leprosy is untreated, then it cause blindness, which is a common and tragic complication of the untreated leprosy. Additional tissue damage in leprosy is caused by immune reactions resulting from delayed hypersensitivity. It's mean कि अगर आपका additional जो damage हो रहा है तो फिर वो delayed, that is resulting from delayed hypersensitivity, and that is Joplin type 1 reactions are vasculitis associated with deposition of antigen antibody complexes, that is called Joplin type 2 reactions. And the former, which occurs in the borderline cases, may rapidly cause severe and permanent nerve damage and require urgent treatment with anti-inflammatory agents. And sometimes surgical decompression of a greatly swollen nerve. The latter occurs at the multibacillary pool of the spectrum and is principally due to deposition of antigen antibody complexes. And how we can diagnose Mycobacterium leprae. The clinical diagnosis may be confirmed by histological examination of the skin biopsies and by the detection of acid-fast bacilli in nasal discharges, scrubbings from nasal mucosa and slit skin smears. यानी जब हमने इनकी डायग्नोसिस करनी है तो फिर जो हम डायग्नोसिस करते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री की, तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स को हम यूज़ करते हैं। तो एक तो ये है कि हम स्किन बायोप्सिस लेते हैं। स्किन बायोप्सिस से मुराद क्या है कि बायोप्सिस हम स्किन के कुछ सेल्स को लेंगे और उनको ऑब्जर्व करेंगे और उनमें से माइकोबैक्टीरियम लेप्री के बेसिलाई को आइसोलेट करेंगे। और इफ़ वी फाइंड माइकोबैक्टीरियम leprae from the skin biopsy, then it is a confirmation that the person is infected with leprosy disease. And we can also stand, that is we also done standing, that is done by acid fast, that is by the detection of acid fast bacilli in nasal discharges. मैंने आपको बताया कि जो nasal discharges हैं उसके अंदर भी इसके bacilli present होते हैं। तो उस केस के अंदर हम जो इसके नेज़ल डिस्चार्ज है हम उसको लेंगे, स्क्रबिंग भी करेंगे फ्रॉम द नेज़ल म्यूकोसा, और हम उसकी स्टैनिंग करेंगे। और जो हम उसकी, क्योंकि ये माइकोबैक्टीरिया हैं, माइकोबैक्टीरिया नॉर्मली एसिड फास्ट होते हैं, नॉर्मल जो हमारी स्टैनिंग प्रोसीजर्स हैं वो ये फॉलो नहीं करते, तो फिर हम इनके लिए डिफरेंट प्रिंसिपल स्टैंड और काउंटर स्टैंड हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और इनके लिए जो हम प्रिंसिपल स्टैंड यूज़ करते हैं हम उसको कार्बन फोस्टन कहते हैं, और फिर जब हम उसको डीकलराइज करके जब उसके ऊपर हम काउंटर स्टैंड यूज़ करें तो मेथाइलाइन ब्लू होगा, और उसके बाद फिर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। तो अगर वो एसिड फास्ट होगा तो वो वहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप उसको देखेंगे तो वो कंफर्म हो जाएगा। और उसके साथ हम स्लिट स्किन स्मीयर्स भी लेते हैं, उसकी मदद से भी
स्टूडेंट्स आपको पीपीटी शो हो रही है? यस सर। और नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम डिस्कस कर रहे थे in smears. The latter are prepared by making superficial incisions in the wrapping of tissue fluid and cells and making smears on glass slides. Smears are obtained from obvious lesions, the yellow, apparently unaffected skin. Secretions and smears are stained by Nelson method and number of bacilli seen right forward as bacillus. However, for usual practical purposes, patients with clinically active leprosy but in whom no bacilli are seen on their skin are described as bacillary disease, and those who are positive at any site are described as having multibacillary skin. तो इस टेस्ट के बेस के ऊपर, स्किन के बेस के ऊपर जब आप हैं तो उसके अंदर या स्मीयर के अंदर जब आपके लेप्रोसी के कोई बैसिलाई प्रेजेंट नहीं होंगे तो उसको हम पैसी बैसिलराई डिजीज कहेंगे, और अगर बैसिलराई उसकी प्रेजेंट होंगे तो हम उसको मल्टी बैसिलरी disease कहेंगे. And this is an important distinction for the selection of the treatment, and it is widely assumed but unproven that leprosy that stand strongly and evenly are viable, whereas those that stands weak regularly are dead. तो इसके लिए फिर हैं कि जो ट्रीटमेंट के लिए इसको हम पैटर्न को यूज is widely assumed कि जो unproven है leprosy stand strongly and even viable, whereas दो जो weakly होते हैं वो regularly dead होते हैं, और बेसिकली क्या है ये assumption है. And the percentage of the farmer gives the morphological index which declines during जो इंफॉर्मेशन मिलती है हम इसको इंडेक्स कहते हैं. Obviously ये जो इंडेक्स है डिक्लाइन करता है ड्यूरिंग, जब आप इसको टाइप ऑफ ट्रीट करते हैं तो इंडेक्स है, and an increase in index is a useful indication of patient and resistance. अगर आपका ये मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, कितना ज़्यादा डैमेज काज हो रहा है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसके बावजूद इंडेक्स जो मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स है, जैसे जब आप ट्रीटमेंट करेंगे कीमोथेरेपी करेंगे तो मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स क्या होगा, डाउन होगा, होगी कि आपकी जो है दैट इज इन द राइट डायरेक्शन. But in cases when we use a different type of chemotherapeutic agents and the index increase in size, then it is an indication that the drug resistance, this mean कि जो drugs आप use कर रहे हैं show कर रहे हैं, and where facilities exist, PCR may be used to detect Mycobacterium leprae in clinical specimens. So clinical specimens or segments को detect कर सकते हैं. So we say that there are different methods that are used to diagnose Mycobacterium leprae and samples of patient. And when we talk about treatment, multi-drug therapy based on dapsone, ampicillin, and clofazimine is highly effective. Choice of drug is determined whether the patient has bacillary or, as I already told you, हम ट्रीटमेंट यूज करते हैं against Mycobacterium leprae, which is basically multi-drug therapy. Multi-drug therapy हम against क्यों यूज करते हैं, इसकी रीज़न ये है कि जो बैक्टीरिया हैं रेजिस्टेंस टू और जो हम मेडिसिन नॉर्मली हमें हो चुकी
किल करने के लिए सिर्फ एक एंटीबायोटिक आता कि वो इफेक्टिव है। हम मल्टीपल ड्रग थेरेपी ट्रीटमेंट है उसको हम करते हैं। नॉर्मली जो ट्रीटमेंट है, जो नॉर्मल हमारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट इसका जो ट्रीटमेंट का है वो लेंथी है। तो जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ माइकोबैक्टीरियम जीनस के जो स्लोली ग्रोइंग हो, ये नहीं कर सकते कि कुछ टाइम के लिए हम यूज करें स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, जो लॉन्ग ड्यूरेशन होती है उसको करके हम उनको किल कर सकें। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो हो सकता है वो डिवाइड करके फिर क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। इसके लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, मल्टी ड्रग यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लेप्सोन यूज़ करते हैं। आपको बताया कि जो हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, देखते हैं कि ये बैसिलरी है या मल्टी बैसिलरी वो डिजीज काज करते हैं। फिर जो हम मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स चेक करते हैं कि अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं और मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स जो सिम्टम उसके शो हैं तो इसमें कि जो एक्टिव है। और डिस्पाइट कि अगर आप एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, मल्टी ड्रग एंटीबायोटिक और वो कर रहा है, मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मीन क्या है, ये है कि वो एंटीबायोटिक्स जो आप उसके यूज़ कर Clofazimine causes skin discoloration, particularly in skin people. जब क्लोफाजीमाइन यूज करेंगे तो स्किन को डिस्कलरिंग करता है, स्किन कलर जो फेड होता है। दिस रिजल्ट इन द पेशेंट refusing the drug, a combination of rifampicin, oxytocin, and minocycline instead monthly for 24 months for multiple disease and maybe use that kidney Clofazimine है वो बेसिकली को अगर फेड कर है तो अगर आप उसके अगेंस्ट यूज करेंगे फिर उसकी को डिसकलर करेगा। नॉर्मली लोग उसकी होती है यूज कर देते हैं इस मेडिसिन से, फिर अगर वो यूज कर लें तो फिर है ड्रग कॉम्बिनेशन रिफाम्पिसिन ऑफ्लॉक्सिन माइनोसाइक्लिन को यूज करते हैं ताकि हम उनको ट्रीट कर सकें। सिंगल डोज ऑफ रिफाम्पिसिन दैट इज कंसिस्ट ऑफ 600 मिली cycling that is 100 has been advocated for the treatment of adults with single lesion bacillary to be inadequate। जो डोज देनी है आपने वो 600 मिलीग्राम वैक्सीन जो है वो 400 साइक्लिन 100 ग्राम ट्रीटमेंट एडल्ट्स के अंदर देनी है। इसके अंदर सिंगल लीजन बैसिलरी लेप्रोसी बाद जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं इसके लिए इनएडिक्वेट है। आपको the treatment of leprosy demands far more than the administration of antimicrobial agents. It is often necessary to correct deformity। यानी जो ट्रीटमेंट है बस ये नहीं करना कि जो अदर उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं आपने क्या करना है, that is to correct deformities and prevent blindness and the damage to hepatic extremities, treat reactions with anti-inflammatory drugs. This situation should be corrected while you are mycobacterium. And here is World Health Organization recommendations for multi-drug therapy leprosy. Type of leprosy, first the type is bacillary in case when we use 600 milligram and supervised and it is given, and when we use Depson in case of passive disease and the dose recommended for Depson 100 milligram that is daily given and it is given by months. And when we talk about multibacillary, then when we given rifampicin, then the dose did for 100 milligram that is monthly supervised 10th month
for 12 months, and for dapsone, which is given 100 milligram, and it is given daily on basis, and in case of trophy, it is given in, it is also supervised, and these medicines are given basically they are given, and in case of passive 6 months. And here you can see that the duration of antibiotic therapy 6 to 12 months, and the reason for 5 of time that ये जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं ये स्लोली ग्रोइंग और ये बहुत टाइम के अंदर इनको करने के लिए ज़्यादा ड्यूरेशन के ऊपर नॉर्मली हम किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट इतनी ड्यूरेशन के अंदर दूसरा इनके अंदर जब भी आप मल्टी ड्रग थेरेपी रेजिस्टेंस शो करते हैं फिर उसकी एफिकेसी को बढ़ाने के लिए ड्रग एंटीबायोटिक्स डिफरेंट कंडीशंस के अंदर पेशेंट्स के लिए भी इसको क्या कहते हैं. And when we talk about epidemiology, once thought to be restricted to humans, leprae has been reported in chimpanzee and monkeys in Africa and living zero in Louisiana, that is as in the USA. And it was also thought that leprosy was transmitted by skin to skin contact, but it now appears more likely that the bacilli are disseminated from the nasal secretions of a patient with lepromatous. And in addition, the blood of patient with lepromatous contains enough bacilli to render transmission by blood sucking insect a definite unproven. This is the basic epidemiology. As in the case of tuberculosis, transmission of bacilli, patients with multibacilli that proceed to their contact occur rapidly, but not only minority of the active develop over activity of patients with bacilli during childhood or early adulthood life, but as the incubation period is usually 3 to 5 years, it is rare in children less than 5 years. जो इसका जो ट्रांसमिशन है वो साइंटिस्ट डिस्कस करते हैं, लेकिन जो कैसे ये ट्रांसमिशन होती है उसकी है टाइम पीरियड्स के अंदर इसके बारे में कंफ्यूजन थी. और नॉर्मली जो इंक्यूबेशन पीरियड है जिसमें सिम्टम्स शो होते हैं वो very slow growing disease, and it takes almost 3 to 5 years to express its symptom, and it is rarely occurs in children aged less than 5 years. And epidemiological studies on the prevalence and transmission of leprosy have been aided by skin test reagents, of which there are 2 types. And one is called lepramines, which are prepared from boiled bacilli-rich lepromatous lesions, and leprosins, which are ultrasonicates of the tissue-free bacilli are extracted from the lesions and are used to denote human and below region respectively. And these regions elicit 2 types of reaction. First is called Fernandez reaction, that is analogous to protein reactivity and appears in sensitized subjects that occurs after 44 hours after testing. It is best seen with leprosins. And the other test is called Masuda reaction. It is a granulomatous swelling that appears about 3 weeks after testing with lepromine. This reaction is indicative of ability to give a mattress response to bacterium, leprae, and positive at near the CT4. Testing is a limited diagnostic value, but it is a useful epidemiological studies to establish the extent of infection context and in the community, and in classifying patients according to immunological spectrum. And so we can say that smears doesn't provide us useful information, but they are helpful
establishing the extent of infection in context and in the community, and classifying patients according to spectrum. And control Mycobacterium leprosy, there are many strategies that are used by health organization to control leprosy in the whole, and effectively the World Health Organization control its distribution in different parts of the world. And the most effective control measure in leprosy, as in tuberculosis, is the early detection and treatment of infectious diseases. Diagnosis, then start treatment of. इसका जो हमने अगर माइकोबैक्टीरियम लेप्रे को कंट्रोल करना है, वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन के अंदर हो चुकी है मोस्टली, उसके लिए कि आप डाइट ट्यूबरकुलोसिस की अर्ली डिटेक्शन करें, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जिसको ये चुकी है, आप उसकी क्या करें, ट्रीटमेंट करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी साइंस जब भी आपको सिम्टम, आप क्या करें, आप ट्रीटमेंट शुरू करें। लेकिन चूंकि इसके स्टिग्मा था सोसाइटी के अंदर, डरते थे बताने से, कि उनको पता था कि अगर हमने ये बात बता दी कि हमें प्रॉब्लम है, उनको तो उस वक्त नहीं पता था ये डिजीज बैक्टीरिया काज करता है। सोसाइटी के इस डर की वजह से बताते नहीं थे क्या। जब वो बताते नहीं थे तो फिर क्या होता था, ट्रीटमेंट डिले होती थी, सिम्टम्स ज़्यादा शो हो जाते थे, तो जो डिसफिगरमेंट काज कर देते थे, जो इरिवर्सिबल होती है, उसके ऊपर आप कह सकते हैं हैंडीकैप भी हो जाता है। And but BCG vaccines seem to protect against in regions where it protects against tuberculosis, strongly suggesting that protection is induced by common mycobacterial antigens. आपको आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Are you? Yes, sir. Next is World Leprosy Day, and there are different days which are celebrated by World Health Organization. There are many days which are celebrated by United Nations, but discuss the days which are related to World Health Organization. And World Health Organization celebrates a day that is जो हम उसको मखसूस करते हैं लेप्रोसी के लिए, और इसको हम वर्ल्ड लेप्रोसी डे कहते हैं। और वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द लास्ट संडे इन जनवरी, and the next world leprosy day will be taken place on that is already taken on 26 January 2020. What is the purpose of World Leprosy Day? The World Leprosy Day raises awareness of a disease that many people believe to be extinct. Today, it is not just a disease that is forgotten, but the people too. Every day, nearly 600 more people are diagnosed with and start treatment for leprosy. In 2014, almost about 2 lakh people were diagnosed, and it is estimated that millions more अनडायग्नोज्ड। जो भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के डेज होते हैं, उनका पर्पस ये होता है कि जो भी डिजीज है उसके बारे में सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाए। इसीलिए लास्ट संडे जनवरी का होता है हर साल, उसको हम वर्ल्ड लेप्रोसी डे के तौर पे मनाते हैं।
और इस साल जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेट किया गया वो 26 जनवरी को किया गया। और ये जो डेज होते हैं इनका पर्पज़ होता है कि अवेयरनेस की जाए ताकि डिजीज़ को कम से कम किया जा सके। और ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेज होते हैं इनका पर्टिकुलर थीम होता है हर ईयर। तो दिस ईयर द थीम ऑफ द वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2020 इज लेप्रोसी इज नॉट व्हाट यू थिंक, यानी लेप्रोसी वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तो इसकी इसलिए कहा गया कि जो हमारी मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी के अंदर, तो उसकी वजह से हमारे बहुत सारे लोग इस बीमारी की वजह से मर गए हैं। तो इसकी मिसकंसेप्शन को बेसिकली उन्होंने हाईलाइट करने के लिए बताया कि लेप्रोसी जैसा आप समझते हैं वैसा नहीं है, ये इतनी डेंजरस नहीं है जितना आप समझते हैं। ये केस डिजीज है जिसको आप क्योर कर सकते हैं। और अगर किसी इंडिविजुअल को हो जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जंगलों के अंदर या अपनी फैमिली से उसको आइसोलेट करवा के उसकी डेथ करवा दें। अब अगर हम लेप्रोसी की पाकिस्तान के अंदर बात करें तो उसके अंदर एक लेडी का नाम आता है जिसको हम डॉक्टर रिक फॉल कहते हैं। और ये वो लेडी थी जो जर्मन नेशनैलिटी की थी और 1961 के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर आई। और पाकिस्तान के अंदर इसने लेप्रोसी का एक सेंटर इस्टेब्लिश किया जिसमें पीजेस को ट्रीट करना शुरू कर दिया जो पाकिस्तान के लेप्रोसी से जिनको इन्फेक्टेड थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लेडी को इतना यकीन था कि इसको वो लेप्रोसी नहीं होता था। अनफॉर्चुनेटली इस पाकिस्तान के अंदर जब भी लेप्रोसी की बात की जाएगी तो उसको ख़त्म करवाने के अंदर इस लेडी का नाम आएगा, से जानेंगे। This is all about for our today lecture. If you have any question then you can ask me.